So dear students, let's do the next heading, and that is the reason in the rising of tertiary sector. In last video we have done the economic shifting from primary sector to secondary sector and secondary sector to tertiary sector. We have done now, and we know very well that if the production increased in primary sector, then that shift to secondary sector. Then if production is increased in secondary sector, then they shift to tertiary sector. Means in every economic, means in every developed country it happened. Means firstly primary sector was developed, then secondary sector, and then in the last tertiary sector. Understood? So in this video we will learn that why the rising in tertiary sector, what are the reasons. Okay, if we talk about our country or if we talk about in the world also, the same thing happened. So see beta, situation, see the situation in India. One graph is given in your book. I'm not writing the data here, I'm writing only year, so you can match the data with in your book. Now listen, if we talk about 1973 1974, so see here, this is the production, means this is the contribution of primary sector in our GDP. Okay, and this is the contribution of secondary sector in our economy, and this is the contribution of tertiary sector in our GDP. Means in 1973 1974 we had done earlier also that up to 1975 जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था उसका प्रोडक्शन में, मीन्स उसका जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. ओके, देन आफ्टर दैट सेकेंडरी सेक्टर विल डेवलप्ड ना, सो देन tertiary sector. So if we talk about 2013 and 14, see the graph. This is the production, means this is the contribution of primary sector in GDP, this is the contribution of secondary sector in our GDP, and this is the contribution of tertiary sector in our GDP. Means जो सबसे ज़्यादा जो contribution है that was yes tertiary sector. Okay, now see if we compare these two, सी बेटा पहले तीनों सेक्टर का इतना कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, उतना सिर्फ अभी प्राइमरी सेक्टर का है. मींस अगर हम 74 टू 2014 की बात करते हैं, मींस प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, मींस तीनों का हुआ है, तीनों ने कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी में, बट सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है अभी, टर्शरी सेक्टर का. ओके, so in this video we will discuss the reason that why this tertiary sector contribution production increased in the economy. What is the reason, means what are the reasons? So let's discuss the reasons. But firstly our basic needs, means we require education, we require health facilities also na, we require training also, we require law and order. So these all services provided by whom? Government na, because if government wanted development in their countries, so they had to provide these services to the population, to their citizens. So this is the first reason that some services are basic services, hospitals, police and government is liable to provide them to the people. Okay, so government is liable to provide these services now because these are basic need of the people. Without this a country cannot develop. So for their development they had to provide their services. When they provide these services, then the tertiary sector will develop. Okay, so this is the first reason that some basic needs, when government provides these services, then the tertiary sector will develop, means the production of tertiary sector will increase. Next, if we talk about second thing, we know very well, in the last video also we had discussed that the tertiary sector help the primary sector and secondary sector with their services. If the secondary sector and primary sector they will develop, the tertiary sector also will develop ना, because जो tertiary sector है उसने अपने दोनों पैर किस पे रखे हुए, एक प्राइमरी सेक्टर पे रखा हुआ, एक सेकेंडरी सेक्टर पे रखा हुआ. जब प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज हुआ, सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हुआ, तो उनके ऊपर क्या है,
टर्सरी सेक्टर, तो टर्सरी सेक्टर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। सो अंडरस्टूड कि जब डेवलपमेंट होगी प्राइमरी सेक्टर में, मीन्स प्राइमरी सेक्टर में जब डेवलपमेंट हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो उसको सर्विसेज की नीड हुई ना, वो बहुत सारी मशीनरी खरीदेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेगा, कम्युनिकेशन की हेल्प लेगा। एंड इन द सेम वे जब सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो दे रिक्वायर्ड ऑल्सो सर्विसेज ना, लाइक हमारी बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, दे रिक्वायर दीज सर्विसेज। सो with the help of these also the tertiary sector will developed. So this is the second reason that when primary sector and secondary sector developed, then the tertiary sector also developed. Okay, now the third thing, income level. Rise in the income level increase the demand for services. See, जब हमारी इनकम बहुत कम होती है तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि चलो जो भी हमारे घर पे अवेलेबल है उसी से काम चला ले, ठीक है, हम कोई टूर प्लान नहीं करते, हम कहीं होटल में खाना खाने नहीं जाते, और हम क्या करते हैं कि जो हमारे घर का काम है वो अपने आप फैमिली मेम्बर्स करते हैं ना, कि नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। बट व्हेन जो हमारे जो अर्निंग हैंड्स है हमारी फैमिली में, उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, मीनिंग उनका इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, देन जो हमारे इंटरेस्ट हैं जो वो भी चेंज हो जाते हैं। सपोज पहले जो काम हमारे फैमिली मेम्बर्स खुद कर रहे थे घर का, नाउ वो क्या करते हैं कि अभी हाउसमेट रख ली उन्होंने घर के काम के लिए, ठीक है, घर पे खाना नहीं बनाते, कभी कभी वो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने के लिए, या फिर हम टूर प्लान करते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं। सो क्या है ये, दीज ऑल आर सर्विसेज ना, मीन्स वी नीड मोर सर्विसेज व्हेन आवर इनकम लेवल विल इंक्रीज। सो बेटा दिस इज़ द कनेक्शन कि जब इनकम लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उससे क्या है, जो टर्सरी सेक्टर है उसकी डिमांड बढ़ती है, उन सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, और जैसे कि जो टर्सरी सेक्टर है इट विल डेवलप्ड। अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट, द लास्ट फोर्थ रीजन, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम न्यू सर्विसेज हैज़ अमर्ज। मीन्स टाइम के साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और जिससे क्या है कि टर्सरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा स्पीड मिली है। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत चीप, मीन्स लो प्राइस पर अवेलेबल है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। जो फॉरेन कंपनीज है वो इसको एक्सचेंज करती हैं, और जो हमारी जीडीपी है उसमें बहुत सारे इनकम इसी की हेल्प से आती है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओके, सो वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ दिस, ड्यू टू दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो this tertiary sector developed. Understood? So these are the reasons. So understood beta? First reason, these basic needs services. Next, if the secondary sector and primary sector developed, then the tertiary sector also developed. Third, if in the rise in the income level, means when the income will increase, then the demand of services, demand of these tertiary sector will also increase. Next, over a period of time and services, means like information technology, communication also increased, then the tertiary sector also developed. Okay, now one important thing, that in this tertiary sector disparity is there. Okay, what are the disparities? See beta, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिससे हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनकम मिलती है वो भी हमारा टर्सरी सेक्टर में आता है। ओके, और जो ठेला लगाते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी तो टर्सरी सेक्टर में ही आते हैं ना। इफ़ वी कंपेयर देयर लेवल, इनकम लेवल, सी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका इनकम लेवल बहुत हाई है, और बेचारे जो लेबरर होते हैं उनका लेवल बहुत कम है। सो दिस इज़ द डिस्पैरिटीज। एंड द सेकेंड थिंग, जो टर्सरी सेक्टर है, कहने को तो क्या है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन आर इकोनॉमी, इन आर जीडीपी, बिकॉज इट प्रोवाइडेड, जो प्रोडक्शन है इसकी सबसे ज़्यादा है, बट इट प्रोवाइड लेस एम्प्लॉयमेंट। मीन्स यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत लेस है, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो मोर है। मीन्स जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, प्रोडक्शन, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन इन जीडीपी और कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी तो बहुत कम है, बट सबसे ज़्यादा जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है हमारी, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इंक्लूड इन दिस। ओके, एंड नेक्स्ट, this provide only less people employment. Understood? So this is the disparity in this tertiary sector. Okay beta, so it is your homework that you will read these two topics. First,
the history of these three sectors, means historical changes that we had done in the last video. And the second, you will read this, the reason of the rising in tertiary sector, and it is very important question also. 4 points are there na. 1 point you can write the introductory line or conclusion line, so we can make it 5 mark question. So beta, if you want to take screenshot, then please take it.